Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you guys are doing great and safe. So today's makeup tutorial will be on this makeup look, which is very fresh summery vibes with a coral and orange eyes with a glossy nude lipstick. If you're ready, let's begin. And also, before going to the video, make sure you subscribe to my channel and press the bell icon so that whenever I post the video you get notified. Also, you can follow me on my social site, Instagram, Facebook. The link will be there in my description box, so don't forget to check that out. I have already moisturized my face. Now I'm using a primer to blur out my pores and also to get a flawless smooth canvas before makeup, which is coming up next. Today for my foundation I'm using a Maybelline Fit Me foundation and I'm in the shade Sun Beige, which is 310. मैं अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ अ फ्लैट टॉप ब्रश विच इज़ कॉल्ड कबूकी ब्रश एज वेल. आप डैम ब्यूटी स्पंज भी यूज़ कर सकते हैं और मैं अपनी फाउंडेशन नेक पे और फेस के पूरे हेयर लाइन तक मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ. फेस को ब्लेंड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टेक योर टाइम एंड ब्लेंड योर फाउंडेशन बिकॉज ब्लेंडिंग इज. कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन की फिट मी कंसीलर एंड आई एम इन द शेड हनी. और मैं अप्लाई कर रही हूँ जहाँ पे मेरा डार्क स्पॉट, डीपिगमेंटेशन और ब्लेमिशेस है, जैसे कि अंडर माय आइज़, अराउंड माय नोज़ एंड ऑल्सो ब्रिज ऑफ माय नोज़, अराउंड माय माउथ एंड अ लिटिल बिट ऑन माय चिक्स जहाँ पे मेरा डार्क स्पॉट है. और मैं ब्लेंड करूँगी विद द हेल्प ऑफ अ फ्लैट कंसीलर ब्रश. मैं टाइम लेके कंसीलर को अच्छे से टैप टैप मोशन पे ब्लेंड कर रही हूँ. टेक योर टाइम एंड ब्लेंड योर कंसीलर, अदरवाइज इट विल क्रीज. कंसीलर को सेट करने के लिए मैं आज यूज़ कर रही हूँ एक कॉम्पैक्ट पाउडर फ्रॉम फेसेस कनाडा एंड आई एम इन द शेड 02 नेचुरल. और ये बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर है अंडर 200 पे, बिकॉज दिस गिव्स यू अ वेरी स्मूथ सिल्की नो पाउडर लुक इफेक्ट. और ये अच्छे से कंसीलर फाउंडेशन को बहुत अच्छे से सेट करता है. आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पैक्ट पाउडर आई केम अक्रॉस टिल नाउ. आई के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ दिस पैलेट फ्रॉम निका के न्यूयॉर्क अंडर द सी. ये बहुत ही अच्छा पैलेट है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में, अंडर 350 के अंदर ये आपको मिल जाएगा. एंड आई एम यूजिंग दिस कोरल ऑरेंज शेड फॉर माई क्रीज एंड आई एम अप्लाइंग इट विद द हेल्प ऑफ अ फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश. और मैं आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक मैं अच्छे से क्रीज पे दिस कलर को मैं ब्लेंड कर लूँगी. For my lid, I'm using another palette from Nika K New York. This is Poison Tree and I love this palette. It has a so bright, beautiful shimmer and matte shade. And I'm choosing this reddish orange color and I'm going to apply it on my lid entirely. I'm going to build this color so that my eye look a reddish orange color, and then I'm going to blend it with the crease color. थोड़े थोड़े लेके मैं कलर को बिल्ड कर रही हूँ. दोनों कलर को मिक्स करने के लिए मैं सेम क्रीज कलर को फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश के मदद से मैं अच्छे से ब्लेंड कर दे रही हूँ, जैसे कि कोई भी हार्श लाइन ना दिखे. और सेम ब्रश के मदद से मैं लोअर लैश लाइन को भी थोड़ा सा स्मजी इफेक्ट दे दूँगी सेम कलर से. For eyeliner, I'm using this liquid eyeliner from Lakme and this you will get it under 150. super अफोर्डेबल है. और मैं आज सिंपल फॉक्सी आई क्रिएट कर रही हूँ. सो फॉर दैट, और मेरा हुडेड आई है, सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर पीपल हु हैव अ हुडेड आई. सो मैं पहले आउटर कॉर्नर में एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, देन मैं इनर जो कॉर्नर है वहाँ पे थोड़ा सा लाइन एक्सटेंड करके उसको मैं जॉइंट कर दे रही हूँ लोअर लैश लाइन के साथ. फिर उसके बाद मैं नॉर्मल जैसा विंग आईलाइनर ड्रॉ करना है मैं वैसे ही ड्रॉ कर रही हूँ.
टू सेट माई ब्राउ फर्स्ट आई एम कोमिंग विद द हेल्प ऑफ अ स्पूली, देन मैं उसको ड्रॉ करूँगी विद द हेल्प ऑफ लैक्मी ब्राउ पेंसिल। ये बहुत ही अफोर्डेबल और चीप प्राइस में अंडर 100 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। और मैं जहाँ मेरा पर्स एरिया है वहाँ पे मैं फिल कर रही हूँ with a simple stroke, and then I'm going to come back and comb it again with the help of a spoon. For mascara, I'm using Lakme Voluminous Mascara. This is super affordable and it gives you a volume and length to your lash, and this is so good. Putting my mascara on my lower lash line as well, it gives a very dramatic look, but it's a very optional step. You can do it if you want. To give some warmth and structure to my face, I'm using a contour from Sugar Cosmetic and this in the shade Body Wonder से blend कर रही हूँ मेरा हेयर लाइन तक, और सेम ब्रश जो मैं यूज़ की हूँ एंगुलर ब्रश, उसके मदद से मैं नोज़ को भी कॉन्टोर कर लूँगी थोड़ा सा स्टीफ करके। ब्रश के लिए मैं अगेन यूज़ करूँगी शुगर कॉस्मेटिक का ब्लश। ये बहुत ही अफोर्डेबल अच्छा प्रोडक्ट है। ब्लेंडिंग ब्रश टू अप्लाई इट, एंड ऑल्सो आई एम ब्लेंडिंग इट विद माई कॉन्टोर एज वेल। For highlighter, I'm using this Shivana Cosmetic Brick Highlighter, and I'm taking this 2 shade and I'm applying it to my inner corner with the help of a pencil brush, and also I'm going to mix the 2 shade and I'm applying on the highest point of my cheek, that is bridge of my nose, cupid bone, a little bit of my chin, and I'm blending it properly. For foxy look, lash को मैं 3/4 कट करके outer corner पे लगा दूंगी। For my lipstick, I'm using this Lakme liquid lipstick in the shade Nude Twist. This is super affordable lipstick under 300. Highly recommend. I'm using Inside Cosmetic gloss. This is super affordable, non-sticky, creamy, natural looking gloss. So here is the final finished look. I hope you guys have enjoyed watching this tutorial and find this tutorial helpful. If you do let me know in the comment section below. Also, please consider subscribing my channel before you leaving. Stay tuned for my next video, which is coming up next very quickly. Till then, stay happy, stay safe. Thank you so much for watching.